ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 1.18. A point charge of 10 microcoulomb is distance 5 centimeter directly above the center of a square of side 10 centimeter as shown in figure 1.34. What is the magnitude of the electric flux through the square? ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसने सबसे पहले कह दिया है कि इसको ये स्क्वायर है। ठीक है, तो उस स्क्वायर की बात करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ पर ये जानते हैं कि अगर मैं स्क्वायर बनाता हूँ, ठीक है, और ये ऊपर एबव दिया हुआ है, तो स्क्वायर बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम फार्मूला लिखेंगे फाई ई का। फाई ई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब अगर मैं ये बात करूं कि सिमेट्री ऑफ 6 faces of a cube about its center ensure that the flux phi s through each square face is same, right? Means all the faces having charges same, right, in the cube, right, due to the symmetry. ठीक, so when charge q is placed at the center, then the phi e will be 6 multiplied by phi s, right, and this is q over epsilon naught, right. Here is uh, so phi s, what is phi s in this case? uh, q over 6 multiplied by epsilon naught, right. तो ये यहाँ तक हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, राइट। तो हम इरेज करते हैं, यहाँ पर इसको इरेज कर देते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। देन फाई एस, व्हाट विल बी द फाई एस? phi s is equal to 1 by 6 into q is 10 microcoulomb, 10 and multiplied by minus 6, here is 10, right, and divide by epsilon naught. So epsilon naught is 1 by epsilon naught is equal to what? 4 pi into 10 to the power into 9 into 10 to the power 9, right. So 10 divided by 6 multiplied by 10 to the power minus 6 and multiplied by 4 pi into 9 multiplied by 10 to the power 9, right. So the total calculation will be come out 1.88 into 10 to the power 5 Newton meter square, Newton meter square and Coulomb inverse, right, ये आएगा। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करके बताएंगे कि इतना आया है या नहीं आया है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पॉइंट इस पे डिस्कस करते हैं। तो हम नेक्स्ट है 1.19, a point charge of 2 uh, a point charge of, I'm erasing this, and its point charge q is given, one second, it's question number 1.19. so it's given a point charge q is equal to 2 into 10 to the power minus 6 coulomb is at the center of the cubic Gaussian surface, 9 centimeter of the edge. So surface is given
yani S is equal to, not given, edge is given, right? So edge is given, so A is equal to 9 centimeter is equal to 9 into 10 to the power minus 2 centimeter, right? What is the net electric flux through the surface, right? So here is also cubic Gaussian surface is there, and point charge is given at the center. So formula is at the center of the Gaussian surface. When I given the Gauss theorem, right, to you, right, application of Gauss theorem is, if main center is there, then the phi E is equal to q over epsilon naught, right? So q is given and epsilon naught is also given, so you should try this formula, right? So okay, so we will discuss